Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you unit number 6 and our topic is the discovery of a new continent. From your book We Learn English Class 5 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Mrs. Bashir is teaching the class about the different continents. Mrs. Bashir class को मुख्तलिफ continents के बारे में पढ़ा रही हैं. She is telling them about new Christopher Columbus discovered America. वो बता रही हैं क्रिस्टोफर कॉलम्स के बारे में जिसने जो है अमेरिका को डिस्कवर किया था. Christopher Columbus was a navigator and explorer from Genoa in Italy. वो एक जो है नेविगेटर था और एक्सप्लोरर था जो कि गेनवा से था इटली में. He lived between 1451 and 1506. His father was a wool weaver. Wool weaver यानी कि जो ऊन बुनते हैं. Columbus' voyages across the Atlantic Ocean led to the discovery of the American continents. वो Atlantic Ocean के across गए थे और वहाँ उन्होंने discover किया था American continent को. In those days, it was very difficult for Europeans to reach India and China as they had to sail around the part of Africa. उन दिनों में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल था यूरोपियंस के लिए कि वो इंडिया या चाइना तक पहुँचे क्योंकि उन्हें पहुँचने के लिए तैरकर जो है अफ्रीका तक आना पड़ता था. अफ्रीका से तैरकर आना पड़ता था. कोलंबस थॉट ऑफ अ न्यू रूट टू सेल वेस्ट टू अराइव इन ईस्ट एशिया. कोलंबस जो है वो एक नए रास्ते से तैरकर जो है वेस्ट से तैरकर पहुंचा था ईस्ट एशिया. In 1492, the king and queen of Spain gave Christopher Columbus 3 ships, men and supplies to reach Asia. 1492 में किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन यानी कि स्पेन के बादशाह और मलका ने जो है क्रिस्टोफर कोलंबस को 3 शिप्स दी थी, आदमी दिए थे और सप्लाईज दी थी एशिया पहुंचने के लिए. ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी हिज मैन वर टेरिफाइड दैट दे वुड बी लॉस्ट एट सी. और जो सफ़र था उसके दौरान उसके पास जो आदमी थे वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि वो समंदर में खो जाएंगे. कोलंबस प्रॉमिस दैम दैट ही वुड टर्न बैक इफ़ दे डिड नॉट रीच लैंड विद इन 3 days. कोलंबस ने उन्हें प्रॉमिस किया कि अगर वो ज़मीन तक ना पहुँचे 3 दिन के अंदर अंदर तो वो वहाँ से वापस चले जाएंगे. ऑन द सेकेंड डे दे रीच द आइलैंड विच दे नेम हिस्पैनियोला. दूसरे दिन जो है वो एक आइलैंड पे पहुँचे जिसका नाम उन्होंने हिस्पैनियोला रखा. द आइलैंड इज़ नाउ द लोकेशन ऑफ हैती. आइलैंड जो है वो हैती की लोकेशन है एंड डोमिनिकन रिपब्लिक और रिपब्लिक डोमिनिकन है. कोलंबस डिड नॉट रियलाइज दैट ही हैड अराइव्ड इन अ न्यू पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कोलंबस को ये नहीं पता था कि वो दुनिया के एक नए हिस्से में आ गया है. ही थॉट ही वाज नाउ इन इंडिया एंड ही कॉल्ड द नेटिव्स हु लिव्ड ऑन दीज आइलैंड्स. और उसे ये लगा कि वो इंडिया में आ गया है और उसे जो है नेटिव्स को कॉल की जो कि इन आइलैंड्स पे रहते थे और इंडियंस को बुलाया. ही रिटर्न टू द एरिया 3 more times. वो उस एरिया में 3 दफ़ा दोबारा गया. ईच टाइम बिलीविंग दैट ही वाज इन इंडिया. हर दफ़ा उसे यही लगता था कि वो इंडिया में है एंड नॉट रियलाइजिंग दैट ही वाज इन अ न्यू कॉन्टिनेंट. और ऐसे इस बात का अंदाज़ा ना हुआ कि वो न्यू कॉन्टिनेंट में दैट वुड लेटर बी कॉल्ड अमेरिका जो कि बाद में अमेरिका कहलाया जाएगा. हु वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.